हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण बधाने। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं चॉकलेट बर्फी। तो आज आपणे घरे इंस्टंट मावो तैयार करीने आ बर्फी बनावशुं। तो चालो बनावीए स्वाद में ध बेस्ट अने मात्र 15 થી 20 मिनिट में तैयार थती चॉकलेट बर्फी। जो रेसिपी सारी लागे तो वीडियो ने लाइक करजो, शेर करजो अने चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो चॉकलेट बर्फी बनाववा माटे आपणे सौथी पहेला इंस्टंट मावो तैयार करवानो छे। तो आपणे पेन में अर्धो कप दूध लई लेशुं। तो अत्यारे आपणे बधी सामग्री ऑफ फ्लेम ज मिक्स करवानी छे। त्यारबाद तेमां आपणे 1/3 कप मेल्टेड घी एड करशुं। हवे घी अने दूध ने बराबर मिक्स करी लेशुं। त्यारबाद तेमां आपणे अर्धो कप खांड एड करशुं। हवे आपणे खांड ने पण बराबर मिक्स करी लेशुं। त्यारबाद तेमां आपणे 2 कप मिल्क पाउडर एड करशुं। तो मिठाई बनाववामां तमारे स्कीम्ड मिल्क पाउडरनो ज उपयोग करवानो। आ मिल्क पाउडरनो उपयोग करवाथी मिठाई एकदम सॉफ्ट तैयार थाय छे। हवे आपणे मिल्क पाउडर ने पण बराबर मिक्स करी लेशुं। तो आ बधी सामग्री ऑफ फ्लेमे मिक्स करवाथी एकदम सारी रीते मिक्स थई जशे अने तेमां लम्स पण नहीं रहे। तो रसोईमां बिगनर्स होय तेने आ रीते मिक्स करवुं वधारे सहेલું रहेशे। तो बधुं बेटर एकदम सरस स्मूथ थाय ते रीते आपणे मिक्स करी लेशुं। त्यारबाद आपणे पेन ने गैस पर लई लेशुं। हवे गैसनी फ्लेम मीडियम राखीने आपणा मिक्सरने सतत हलावतुं रहेवानुं छे। तो आपणो मावो एकदम सरस दाणेदार तैयार थाय अने पेनथी मिक्सरने छूटुं पड़े त्यां सुधी आपणे तेने सतत हलावतुं ज रहेवानुं छे। तो आपणे आ मिश्रणमां खांड एड करे छे। खांड थोड़ी मेल्ट थशे तो मिश्रण थोड़ुं पातळुं थशे। तो आपणे गैसनी फ्लेम मीडियम राखीने आ मिश्रणने सतत हलावतुं ज रहेवानुं छे। तो 5 થી 7 मिनिट आ रीते हलाववाथी मिश्रण एकदम सरस दाणेदार तैयार थई जशे। तो हवे आपणो इंस्टंट मावो तैयार छे। तमे जोई शको छो मिश्रण एकदम सरस दाणेदार तैयार थयुं छे। तो आपणो मावो तैयार छे। हवे आपणे गैसनी फ्लेम बंध करी देशुं। तो आपणुं मिश्रण बर्फी माटे परफेक्ट तैयार छे ते चेक करवा माटे आपणे थोड़ा मिश्रणने आ रीते हाथेथी भेगुं करशुं। जो एकदम सरस बाइंड थई जाय तो आपणे बर्फी बनाववा माटेनो मिश्रण तैयार छे। तो अत्यारे आपणे चॉकलेट बर्फी डबल लेयर वाળી तैयार करवानी छे। तो आपणे मावाने 2 सरखा भागमां डिवाइड करी लेशुं। तो एक पार्टने आपणे प्लेटमां काढी लेशुं अने बीजा पार्टने आपणे पेનમાં ज રહેવા દેશું। तो आ रीते आपणे बर्फीना मिश्रणने एक पार्टने प्लेटमां काढी लीधुं छे अने एक पार्टने आपणे पेનમાં ज राख्युं छे। हवे आपणे वधेला बर्फीना मिश्रणने चॉकलेट फ्लेवरनुं बनाववा माटे 1 चमची कोको पाउडर एड करशुं। कोको पाउडरने पण आपणे गैसनी फ्लेम मीडियम राखीने सारी रीते मिक्स करी लेशुं। तो आपणे बर्फी माटेनुं चॉकलेट लेयर पण तैयार छे। हवे आपणे गैसनी फ्लेम बंध करी देशुं अने आ मिश्रणने पण आपणे प्लेटमां काढी लेशुं। हवे आपणे चॉकलेट बर्फी सेट करवा माटे आ रीते केक टीन लीधुं छे। तेने आपणे घीथी ग्रीस करी लेशुं। અને નીચે આપણે આ રીતે બટર પેપર લગાવી દેશું જેથી કરીને આપણી બરફી ઇઝીલી રિમૂવ થઈ જાય। તો હવે આપણે બરફી 2 લેયર વાળી બનાવવાની છે। તો તેના આપણે બંને લેયરના મિશ્રણ તૈયાર છે। તો આપણે પહેલું લેયર મોલ્ડમાં સેટ કરી દેશું। હવે આપણે બીજું ચોકલેટનું લેયર પણ કરી દેશું। तो आ रीते आपणे मोल्ड में चॉकलेट बर्फीना बंने लहेरने सेट करी लीधा छे। हवे तैयार थयेली बर्फीने आपणे चांदीना वरखथी गार्निश करशुं। तमे आ बर्फीने ड्राय फ्रूट्सथी पण गार्निश करी शको छो। तो फ्रेंड्स अत्यारे तहेवारोनी सीजन छे तो तमे पण आ मीठाई एकवार चोक्कसथी ट्राय करजो। आ मीठाई मीठाईवाळानी दुकान करता एकदम चोखी अने ओछा खर्चामां घरे खूब ज झड़पथी तैयार थई जाय छे। हवे आ तैयार थयेली बर्फीने आपणे 20 થી 25 मिनिट सेट थवा राखी देशुं।
તો 20 થી 25 મિનિટમાં આપણી બરફી એકદમ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તેને આપણે નાઈફની મદદથી સાઈડથી રિમૂવ કરી લેશું. અને મોલ્ડને આપણે એક પ્લેટમાં પલટાવી લેશું. તો આપણે મોલ્ડમાં નીચે બટર પેપર લગાવેલું છે, તો આપણી બરફી મોલ્ડથી ઇઝીલી છૂટી થઈ જશે. હવે આપણે બટર પેપરને કાઢી લેશું. તો આપણી ડબલ લેયરવાળી એકદમ સરસ બરફી તૈયાર છે. તેને આપણે કટ લગાવી લેશું. તો અત્યારે આપણે ચોરસ પીસમાં બરફીને કટ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો, માર્કેટમાં મળે તે જ રીતે આપણે ડબલ લેયરવાળી ચોકલેટ બરફી ઘરે જ તૈયાર છે. તો આ બરફી એકદમ સરસ સોફ્ટ તૈયાર થઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ચોકલેટ બરફીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.